everyone, welcome to my YouTube channel. For today's video, my topic is Diabetes Mellitus. In this video, we are going to cover Diabetes Mellitus types, causes, signs, symptoms, with also pathophysiology and many more. Before starting, this video will be divided into two segments according to the types of Diabetes Mellitus, that is type 1 Diabetes Mellitus and type 2 Diabetes Mellitus. Before starting, let's see the topic, the terminology of our topic, that is Diabetes Mellitus. क्या है Diabetes Mellitus? हमने आजकल in our day-to-day life we are going through it कि I am a diabetic patient. Let's see the terminology. Diabetes means polyuria, which polyuria means a frequent urination. If a person is diagnosed with a diabetes, he's going with a frequent urination. And mellitus means honey, the sweetness to frequent urination because of sugar. Let's see further what exactly it means. This term Diabetes Mellitus is coined by Thomas Willis in 1675. क्या होता है Diabetes Mellitus? It is a clinical syndrome. ये एक ऐसे तरीके का सिंड्रोम है जिसमें अपने बॉडी में एक हाइपरग्लाइसेमिया होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो ब्लड में जो ग्लूकोज या शुगर लेवल होता है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है. So it is a clinical syndrome. It is a clinical syndrome characterized by hyperglycemia. Hyperglycemia, this term itself means the increased level in our blood sugar level. Increased in blood sugar level. और ये हमारे बॉडी में क्यों हो रहा है? नॉर्मल से ज्यादा क्यों हो रहा है ग्लूकोज लेवल? इसकी सीधी सी कहानी किससे रिलेट हो रही है? इंसुलिन से. इंसुलिन से रिलेट हो रही है. अब इंसुलिन क्या है वो देखने से पहले हम डायबिटीज मेलाइटिस के टाइप्स देखते हैं. टाइप. The main types of diabetes mellitus are mainly two, that is type 1 diabetes mellitus, जिसको हम IDDM भी बोलते हैं, and second is type 2 diabetes mellitus, जिसको हम NIDDM भी बोलते हैं. What does IDDM means? Insulin dependent diabetes mellitus. And NIDDM means non-insulin dependent diabetes mellitus. टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जिसमें इंसुलिन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसमें इंसुलिन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा है. इंसुलिन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, किसी और ही वजह से टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हो रहा है, विच मीन्स नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस. Now, basic information we will see first about कि इंसुलिन exactly क्या है. क्या है इंसुलिन? Insulin is released by pancreas.
इंसुलिन को कौन रिलीज कर रहा है हमारे बॉडी में? पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज का क्या फंक्शन होता है कि वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करे, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करे या नॉर्मल रेंज पर रखे। ओके। और पैनक्रियाज कैसे डिक्रीज होता है, मतलब पैनक्रियाज कैसे डिक्रीज करेगा इंसुलिन को बोलो या ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करेगा, कैसे करेगा? बेसिकली जो पैनक्रियाज होता है उसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं जिसमें मल्टीपल सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, जिसमें से जो बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स रिलीज होता है। बीटा सेल्स क्या रिलीज करता है? इंसुलिन। ओके। इफ वी गो थ्रू अ बेसिक फ्लो चार्ट, पैनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं मल्टीपल। In this there are multiple cells, alpha, beta, delta। उसमें से जो बीटा सेल्स होता है वो रिलीज करता है इंसुलिन। ओके। नाउ लेट्स सी द production of insulin, the pathophysiology of insulin, how it created in our body or how it forms. Let's see the basic story of insulin. This is pancreas. In pancreas there are multiple cells which is called islets of Langerhans. In this beta cells release insulin. Okay. अब इंसुलिन अपने बॉडी में रिलीज तो हुआ है। नाउ लाइक दिस इंसुलिन इज रिलीज इन आवर बॉडी। अब इंसुलिन को अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाना है ताकि वो एक एनर्जी दे सके सबको। सपोज दिस इज आवर ब्लड स्ट्रीम, इन दिस देयर इज इंसुलिन। ओके। नाउ इंसुलिन हैव टू स्प्रेड आउट थ्रू आउट आवर बॉडी। पहले वो लिवर में जाएगा, लिवर में इंसुलिन ग्लाइकोलाइसिस होगा ग्लूकोज का, कन्वर्ट टू ग्लाइकोजन। सेल्स में जाएगा, सेम ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन। मसल्स में जाएगा, लिवर सेल मसल्स में जाएगा, इन मसल्स आल्सो सेम ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोजन कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन। As we know, in human body or in animals, the energy is stored in the form of glycogen, and in plants, energy is stored in the form of starch. For example, हम खाना खाते हैं, obviously we eat, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता ही है। अल्टीमेटली उनको ब्रेक डाउन होकर बनना तो ग्लूकोज ही है, तो आपके ब्लड में ऑब्जॉर्व होगा। ब्लड में ऑब्जॉर्व होने के बाद इट goes to liver, cell, muscles and store as an energy, and whenever we need it, the energy we use. So this is the basic story of insulin. Let's move forward. Now we will see type 1 diabetes mellitus pathophysiology. Type 1 diabetes mellitus, which means insulin dependent. ये एक ऑटो इम्यून डिसीज होता है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। इन दिस टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस बॉडी इज अनेबल टू मेक इंसुलिन, इंसुलिन बनाने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस कॉज होता है। लेट्स सी द पैथोफिजियोलॉजी। सेम पैनक्रियाज, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इन दैट बीटा सेल्स। टाइप 1 में क्या होता है, जो बीटा सेल्स है, जो टी सेल्स होते हैं ऑटो इम्यून के, वो बीटा सेल्स पे अटैक करते हैं। अटैक करके क्या होता है, बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन।
और बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हुआ, विच मीन्स इंसुलिन बना ही नहीं. 70 to 90% बीटा सेल्स विल गेट डिस्ट्रॉयड. ऑब्वियसली इंसुलिन तो बीटा सेल्स से ही रिलीज हो रहा था ना. अब बीटा सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो गए तो इंसुलिन कहाँ जाएगा. So due to this, the body is unable to make a insulin because T cells of autoimmune disease, autoimmunity, it destroys the beta cells. And why this happen? Why this happen? Most of the type 1 diabetes mellitus disease caused due to a genetic or heredity. Due to genetic or heredity we can say. Or it also called due to genetic disposition. Which means हमारे क्रोमोसोम में एक शॉर्ट आर्म होता है और एक लॉन्ग आर्म. जेनेटिक डिस्पोजिशन. शॉर्ट आर्म. This short arm HLE, human leukocyte antigen. There are two, DR3 and DR4. Two antigens which causes genetic dislocation, and due to this, diabetes mellitus type 1 disease is caused. Now we will see the symptoms. Symptoms of type 1 diabetes mellitus. Type 1 diabetes mellitus किससे हो रहा है? Deficiency of insulin, which means lack of insulin. इंसुलिन की कमी अगर हमारे बॉडी में हुई तो हमें क्या सिम्टम्स देखने मिलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इंसुलिन कम होगा तो हमारा जो एनाबॉलिज्म है वो डिक्रीज हो जाएगा. सिमिलरली कैटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा. If our anabolism decreases, hyperglycemia, increased blood sugar level, हाइपर इंक्रीज हो गया हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लाइकोसूरिया, presence of glucose also will be seen in our urine, which causes polyuria, frequent urination. If a patient is having a frequent urination, he will go through a polydipsia. Polydipsia means thirsty, thirstness, प्यास लगना. Due to polydipsia, salt and water depletion, and due to salt and water depletion, it will decrease the hypotension. And if catabolism increases, we can see glyconeogenesis, lipolysis, hyperketonemia, and also acidosis, acetone breathing. Acid. To know if a patient is diabetic or not, there are some investigations by which we can identify is a patient diabetic or not. The investigations are first is urine test, which is in urine test we can do a deep stick test, glucose and ketone deep stick test. Second is diabetic profile blood test. In blood test, glucose we can test, glycolytic, hemoglobin. We can check glucose in two states, fasting, non-fasting. Fasting normal range should be 80 to 100 mg per day, and non-fasting mg per day. Calculated HD normal range will be 4 to 5.6%, which means in our blood the glucose level is normal. But if increases above this, then a patient is diabetic.
A patient with one diabetes mellitus can have treatment like injections, insulin injection, regular injection of insulin or latent injection. The treatment is prescribed by doctor. Thank you for watching.